progressive. Past simple, past progressive, past perfect, past perfect progressive. Next letter, future tense. Future tense and background time. Simple future simple first. Future simple. Second, future progressive. Future perfect. The future perfect progressive. Future perfect progressive. Future perfect progressive. Total number 12. Uses of simple present. Uses of simple present tense. Uses of simple present tense. Uses of simple present tense. First rule. Simple present is used. Simple present is used. Point one. To express general truths. To express general truths. General truth. Example there. The earth moves around the sun. The earth moves around the sun. The earth moves around the sun. What example that is? Next, students. Concept clear है था? जो general truth थी वो से जगह implement करीबा while simple present. पहले rule हमें देखने ले to express general truth. Example ले लगा कौन? The earth moves around the sun. ये कौन ले? Second लेखा to describe a habit or custom. To describe a habit or custom. To describe a habit or custom. Custom. C-U-S-T-O-M. Habit और custom का difference होगी. Habit is personal. Custom is social. Celebration of Dasara. এটা ଗୋଟେ custom. এটা social celebration में festival টা. A habit होगी कौन? Personal. To raise or to rise up late. To awake late. पिछला टिके डेली उठिबा. से देला कोन habit. बहुत पिला आसिनांती सोई पड़ी जाती. that is habit. हैला? In the celebration of new year. Habit is personal, custom is social. अच्छा example. The office opens. The office opens at 10 o'clock. The office opens at 10 o'clock. देखो पहले ऑफिस नीति दिनिया 10टा बेले कोन हुए का खोला जाई थाए opens. ऑफिस से ला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रे एस किबा एस लागिबो प्रधान बुझे उठी प्रधान how to express what is actually taking place. To express what is actually taking place at the present moment. At the present moment. To express what is actually taking place
at the present moment. Express what is actually taking place at the present moment. Example: the child runs. The child runs. It means the child is running. Present moment रे जोटा occurrence करूची सेटा progressive रे रहिबा कथा किंतु एठी नाम लागेनी adverbial लेकिन जेते बेले हमर adverb modify करिबो सेते बेले हमें कोन करिबो ना particularly ing format यूज करूचे किंतु जेते बेले एठी express करूची taking place at the present moment वर्तमान मुहूर्त रे कोन सी घटना घटुची से जगह हमें simple present यूज करिबा एग्जांपल मु कहबी the child runs. The child speaks. The child talks. The child plays. Now, tense pattern babadare. This our initial stage. Basic rate में पढ़ाई जीवो ये जो बुक स्टोर अच्छे दुकान में जो फॉन्ट रहे tense chapter जो मैंने पर practice में की वो तो बुक at least. अब इंग्लिश रा बेसिक की गला मैंने तुम्हें फंडामेंटल होती tense. Tense ऊपर टोटली एक्सपोजर हुआ बहुत से practice करनी हो सही आपका मैं कौन करेगा interchanging करेगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जेतबे करि नबा गोटे अफर्मेटिव टू नेगेटिव नेगेटिव टू अफर्मेटिव अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव अफर्मेटिव टू इंपेरेटिव इंपेरेटिव टू अफर्मेटिव टू एक्सक्लेमेटरी सब गुडा के पूरा में ट्रांसफॉर्मेशन करि दबा वी विल बी द वेरिएंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश काहे तमे तो सब बेले समस्त अफर्मेटिव रे कहिबनी ना तमे कोन कहि परिबो नेगेटिव कहि परिबो इंटरोगेटिव कहि परिबो इंपेरेटिव कहि परिबो विषय बुझिउ ना नहीं आर्ट्स पिला मानकर भाइटल होची चैप्टर इंग्लिश अब इंग्लिश रे पढिला कहले तुम ऊपर बहुत डिपेंड होछ नले मु देखुची 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष रे पिला में किछि परिवर्तन होबनी किछि परिवर्तन नाही the child is running now के दिखा तो रनिंग सेटा में प्रोग्रेसिव नहीं प्रोग्रेसिव हो तो हम ग्रामर रनिंग कंप्लीट को कहि द चाइल्ड इज रनिंग तो दौड़तिला तुम कहला स्टॉप हो जाए जे लिखिबो काई भीतर दौड़ुनी क्रिकेट कमेंट्री मु कहबी तोरा जे इरफान बोल्स मु कहबी नि इरफान नि बोलिंग तमन को हाथ बुलुची बोल्स बुझियो जी प्रधान fourth rule to describe past events to describe past events to describe past events in order to make the description to describe past events in order to make the description seem more vivid or real seem more vivid or real after repeat karuchi to describe past events in order to make the description seem more vivid or real example you are invited to see it in your mind's eye as a running picture Author कहूची you are invited to see it in your mind's eye as a running picture एटा कोन हिस्टोरिक इवेंट तमे जेते बेले जाउछ हिस्टोरिक इवेंट काई कहूची ऑलरेडी तमे जानि छ तारा जे महाभारत युद्ध होची पांडव कौरव तमे से स्टोरी टा ऑलरेडी जानि छ से स्टोरी स्टार्ट जेते बेले गेला तमे कोन करते नाही महाभारत सुना हेगा हम देखिबोनी ऑलरेडी तमरो पिक्चर आई हे जाउछ मन कौन सी घटना हिस्टोरिक इवेंट
हम मन रे पिक्चराइज हे जाउची डेलिबरेशन रे सेटा का हमें सब बड़ ପାଇଁ पास्ट किबा पिक्चर रहै सब बड़ ପାଇଁ सेटा आसीबो केबे आसीबो कोटेशन फोर्थ रोल टू समराइज ए स्टोरी fifth rule to summarize a story or describe an action in a dramatic manner dramatic dramatic in a dramatic manner Audra Kauji to summarize a story or describe an action in a dramatic manner. Example: Irfan runs up to the wicket. Irfan, I-R-F-A-N. Irfan runs up to the wicket. Full stop. He bowls. How to take them? Irfan runs up to the wicket. हमें कहीं कहीं Irfan is running up to the wicket. इटा mistake. Runs up to the wicket. कारण कौन? हमें जो summary बा story दो चु ताकु describe करू चु in a dramatic manner. केवल dramatic manner रे इटा को complete कराए जे. नहीं जितबेले मु उदाहरण स्वरूप कहबी वर्तमान महाभारत युद्ध चली छे महाभारत युद्ध रे प्रधान होची भीम तमे होते दुशासन तमे तले कोन कहबो मु दुशासन कहूची से कहबो मु भीम कहूची सेतबे तमे निजे पे निजे पिक्चर रे आइडेंटिफाई कर देबो ड्रामा रे कोन से रोल करिवो ना से रोल कला बेले जे गुडा रनिंग कमेंट्री बा डायलॉग गुडा आसीबो सब बेले आसीबो कोउतरे हमें कहबानी महाभारत युद्ध रे भीम कहिदिले दुशासन कहिदिले ना जो रोल ता में परफॉर्म करिबो हम डायलॉग गुडा को सब गुडा को बेनिफिट पर नहीं करिबो नेक्स्ट sixth rule to quote authors you quote te सबसे पहले sixth rule to quote authors to quote you quote the to quote authors whether living or dead to quote authors whether living or dead example Shakespeare says Shakespeare S-H-A-K-E-S-P-E-A-R-E Shakespeare says life is but a walking shadow walking W-A-L-K-I-N-G life is but a walking shadow walking W-A-L-K-I-N-G walking shadow
এটা লাইফ ইজ বাট এ ওয়ার্কিং সম্পর্ক ଗୋଟେ ইনভার্টেড ভিতরে দেখো ক্লিয়ার ইনভার্টেড ভিতরে আচ্ছা 7 লেখো রুল নম্বর 7 to express a future event express a future event express a future event that is part of a fixed timetable fixed fixed timetable or fixed program or fixed program or fixed program example the match starts at 5 o'clock. The match starts at 5 o'clock every day. The match starts at 5 o'clock every day. जोटा हमरो प्रश्न अराइज कला क्वेश्चन इज सिंपल फ्यूचर पूरा तो सब फ्यूचर टेंस नहीं कि फ्यूचर टाइम रे एक्सप्रेस होते मु कहबी मु आसंता काली पूरी जीबी मु आसंता काली पूरी जीबी ता माने एबे ठारू मोर प्लानिंग कर देले आई एम गोइंग टू पूरी टुमोरो अर्थ बुझे कि तमने पूरी को जीवा में पैकिंग करनी मु रेडी हे गेलनी जिनिस पत्र धरी मु आसंता काली पूरी जीबी जाउ सुतो जीबी से जगह में कौन से आई एम गोइंग टू पूरी टुमोरो किंतु एटी देखो टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल गोटे निर्दिष्ट टाइम टेबल को ऑलरेडी फ्यूचर इवेंट अछि कोन ना द मैच स्टार्ट्स एट 5 o'clock तार माने मैच टा स्टार्ट होबो कितना बळे 5 बुझियो क्या रे तबरे लेखो present continuous tense present continuous tense tense is used present continuous tense is used first lekha rule to describe an action to describe an that is happening at the time of speaking क्वेश्चन से पिला भी कहबो कथा I am going to हमें जेते बेले प्रथम फ्यूचर टेंस को दीटा फॉर्मेट रे बेसी यूज करा जाय गोटे होची सिंपल फ्रेज आ गोटे होची हमें जति कहबो हमर विशेष करे हमर जेते बेले दिया जाउची समर वेकेशन छुट्टी रे साधारण केते जुलाई 20 जून 20 बेले खुली जाय ना कि हमें सेते बेले कोन कहते जे स्कूल विल ओपन एमती कहबे द स्कूल reopens
पुनर् केबे कलुची रज 18 को छु रज पर साधारण स्कूल छुट्टी कंप्लीट हुए नहीं लास्ट रज दिन को सर दिबो तापन आरंभ हेतियो क्लास एटा रीओपन्स को दिबो हमें कहबे जे स्कूल इज रीओपनिंग एटा निश्चय तनो बहुत जगह कोन होची ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आउ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्मेट को कोन करछन ना प्रेजेंट करछन आ एक्सरसाइज करा बेले हमको आउ भी कॉन्सेप्ट दिया देखा पिले हमें फर्स्ट रूल देखले to describe an action that is happening at the time of speaking. Example: the boys are playing. The boys are playing cricket now. The boys are playing cricket now. हाँ वर्तमान जोटा नाम लगी गला नाम लगला माने एट द टाइम ऑफ कौन से ऑकरेंस करती सेतेबेले मु जाए आई गो मु कटक जाऊ होइसी आई एम गोइंग टू कटक तापरे नहीं आई एम गोइंग टू डू वर्तमान जोटा घटू जीवा देखो रनिंग कमेंट रे वर्तमान जोटा घटुची ग्रामेटिक रे वर्तमान जोटा घटुची आमे ताकू सिंपल प्रेजेंट बोली कहले अलगा सब गुडा को कोन हबो जेते बेला हमें एडवर्बियल प्रीपोजिशन दउतिबा सेते बेला हमें कोन कहले धरा जब मु कहबी द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ वर्तमान पिला ने कोन करते हमें जेते बेला जोटा कहले से एक्सप्रेशन ता केते बेला घटुची आ गुले कह एग्जांपल आ गुडा दउना लुक देयर look there the man is beating the child the man is beating the child look there सेठी देखो वर्तमान कोन करछि चाइल्ड के पिलाटा कोन करछि ना मारुछि the man is beating the child the man is beating the child देखो जेतेबेले कोन से घटना घटुछि हम एक्सपोजिंग वे रे expressive होची betting the child it's going on that is happening next I got it second rule to describe an action to describe an action to describe an action going on over a period of time over a period of time over a period of time example I am learning French I am learning French बहुत दिन हेलानी मु कोन करूची ना फ्रेंच भाषा सिखुची हैला कि या मु कहबी my friend is writing a novel तमने ता नोवेल लिखियो हम गोटे दिन सर जीवो की कंटिन्यू कला तमु जदि के पचारबो व्हाट आर यू डूइंग नाउ आई एम लर्निंग माय और आई एम परसुइंग माय प्लस 2 सेकंड ईयर आर्ट्स आई एम अपने कंप्लीट करू छु बोली कंप्लीट पढु छु वर्तमान बोली एबे पढाटा हमर चालू रही छु बोली तापरे एग्जांपल लेबे I am learning French. Next. Third rule to describe an action. To describe an action which is going to take place in the future. To describe an action which is going to take place in the future. To describe an action which is going to take place in the future. हालांकि वो घटनाटा वर्तमान फ्यूचर रे जाउची घटिया नाही to describe an action which is going to take place in the future. Third rule. To describe an action which is going to take place in the future.
एग्जांपल लेखा I am leaving for Bangalore tomorrow. I am leaving for Bangalore tomorrow. I am leaving for Bangalore tomorrow. नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेखा some verbs due to their meanings are not normally used in the continuous verb. Some verbs due to their meanings are not normally used in the continuous verb. Continuous verb. Example. Here lekha. Verbs of a sense. Verbs of a sense. Example C. Hear, smell, etc. See, hear, smell. Appropriate verbs of a sense. Today I am not use of nahi. ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛି I see a bird. I see a bird. କହିବା ମାନେ I am seeing a bird. ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛି I hear you. I hear you. पुणी देख आ गोटे रहउची हमर पर्टिकुलरली हमें जेतले कहबा स्मेल मु वासना बारुची तरकाटा पड़ी जाउची आई स्मेल द करी बर्निंग आई स्मेल द करी बर्निंग आई स्मेल द करी बर्निंग आई गोटे कहले आई एम स्मेलिंग द करी बर्निंग जस्ट आई टेस्ट I am tasting. I taste the curry. Salty. सब गुडा एगुडा कहउचे verbs of sensation बा आमे जेउटा कहउचे verbs of perception इंद्रिय अनुभूति इंद्रिय द्वारा अनुभूति एथिरे आईएनजी फॉर्मेट नै सब गुडा सिंपल प्रेजेंट रे यूज करा जिवो तापर लेखा बिले verbs expressing feelings or state of mind. Verbs expressing feelings or state of mind. Verbs expressing feelings or state of mind. Coco word like hate, H-A-T-E, hate, wish, hope, forgive. एगुडा के सब कोन करा जाय एक्चुअली आईएनजी फॉर्मेट रे लव गोटा फीलिंग्स भी सेठी कोन हो आईएनजी फॉर्मेट यूज हो हमें कोटी यूज करनो आई एम लविंग यू आई एम हेटिंग यू के टर्म रे यूज करा जाय सब बड़े सिंपल प्रेजेंट रे यूज करा नेक्स्ट स्टूडेंट्स verbs of thinking or some mental activity verbs of thinking or some mental activity. Example, think, remember, believe, know, understand, imagine, etc. Imagine, etc.
आउथरे कहूची words of thinking or some mental activity think remember believe know understand imagine एगुडा गरे मथा लागिबो नै कोन केडा मेंटल एक्टिविटी आधरे आईएनजी फॉर्मेट लागिबो नाही फोर्थ लेटर verbs of possession example possesses comma own comma belong etc तापर ई रे लेख some other verbs आउ किछि वर्ब अछि जो गुडा कि आईएनजी रे यूज करा जाय नै कोन से गुडा रहइला appear comma seem comma look etc तापर पिले लेख look l o o k ऐसे बोलने में ये जितना वर्ड्स ऑफ पोजीशन तारा जो मुझे भी some other words appear आउ सेम look एगुडा को जते बेले तार ऑलरेडी रहिबो आईएनजी फॉर्मेट ପାଇଁ कंटीन्यूअस फॉर्मेट हम यूज करबा किंतु एगुडा को साधारणतः जो हम जति की एक्सप्रेशन करले एगुडा को सिंपल प्रेजेंट टेंस रे यूज सिंपल प्रेजेंट रे केमिति यूज करा जिवो आर ऑलरेडी से एक्सरसाइज अछि चैप्टर रे ए रूल गुडा पढला परे जते हम एक्सरसाइज करबा हम प्रैक्टिकल किंतु जते बेले पास्ट टेंस हम पढिबा सेते बेले हमको टिके डाउट आसी ए रूल गुडा से इम्प्लीमेंटेशन है कि पास्ट हम भाबे जे कोटा सिंपल प्रेजेंट रे कोटा सिंपल पास्ट बहुत गुडा कोन हो सेम हो बहुत आंसर अछि सिंपल प्रेजेंट रे करिदा सिंपल पास्ट रे नहीं नेक्स्ट स्टूडेंट्स the present perfect tense uses of a present perfect tense uses first point to indicate that present perfect tense को जगह रे यूज करा जाए first rule to indicate that an action has been completed comma finished or done just now an action has been completed comma finished or done just now example I have finished the painting just now I have finished the painting just now second I would example grandmother has just written a letter grandmother has just written a letter grandmother has just written a letter second to indicate that the action has taken place sometime in the past out there to indicate that the action has taken place sometime in the past particularly जेतबेला हमें
गुड एग्जांपल दउची अजय हैज eaten all the biscuits अजय हैज eaten all the biscuits हैज eaten तेणु जोटा प्रेजेंट फॉर्मेट मु सब खाई देची माने मु सब खाई देली आजिकली प्रेजेंट परफेक्ट रो जोटा इंप्लीमेंटेशन सिंपल पास्ट सहित करेस्पोंड करूची मु ए पाठटा को पढ़ी देची मु कहबी ए पाठटा को मु पढ़ी देली ऑलरेडी कंप्लीटेड सेंस को बुझेला बुझबो तो ना हो सुमन गौतम बड़ेगा अब्रम को very good very good So everybody's time specific time there was the object he hours with the specific time that is not the matter when we discuss about we have certain type of infatuation that the time for the conception has been completed maybe I have completed the chapter I completed the chapter मु चिलिका देखिची मु चिलिका बुलिबा को जाईती अतो दिन नाही पुणी मु कहबी मु पूरी गल्ली सिंपल पास्ट आजिकली सिंपल पास्ट पर प्लेसमेंट होती को जगह रे पास्ट परफेक्ट जगह तमे कहि बंदे आई went to Puri I went to Puri yesterday I went to Puri a week ago हमें कोई कहा आई हैड गॉन टू पुरी से ठीक किंतु मॉडर्न इंग्लिश को भी सिंपल पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट रे यूज करना आ सिंपल पास्ट रा परसेप्टिव जा प्रेजेंट परफेक्ट रा पर्सपेक्टिव से सेंस ऑन दे बुझिबा को चेष्टा करो समस्त के ग्रुप रो एक्सरसाइज करो ताल जे कांसेप्ट क्लियर हो तले तमु खाली एबरा अजणा सब लागुती हमें टेंस रे जानि के रेगुलरली कोड लागिला कंटीन्यूअसली लागिला ए फॉर्मेट रो बेस करी कंप्लीट करैनो किंतु डिटेल स्टडी के लिए एग्जांपल गुडा बेले बेले हम पई एम्बिगुअस व डाउट कोई रहउछि सर आज्ञा सर जो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट रो डिफरेंस भी रही छी सिंपल पास्ट रे प्रॉपर टाइम परफेक्ट कथा मु कहबी राजा गत काली मु पूरी जाईथिली आई हैड गॉन टू पूरी यस्टरडे मु सेही सेंस को कहि परिबी जाईथिली जोटा मु पूरी करली गत काली मु पूरी करली सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट रो मीनिंग टू सर्टेन एक्सटेंट मॉडर्न इंग्लिश रे सेम I had gone to Puri ja I went to Puri seya so far as expression is concerned किंतु जेतबे ग्रामेटिकली हम यूज करिवा साधारणतः हार्ड होची पास्ट परफेक्ट रो वर्ब हार्ड होची पास्ट परफेक्ट रो वर्ब आ हार्ड परे सब बेले वर्ब रो हार्ड फॉर्म लागिवो v1 v2 v3 v3 फॉर्म ता सब बेले हार्ड परे लागिवो ये लिमा कहूची की आज्ञा सर लिमा आज्ञा औमा और ठीक है ऑफलाइन के असले के कांसेप्ट क्लियर हो मतो वॉइस सुन करने किसी जानि परनी तथापि सर देह जमा भी पड़ता नहीं आज्ञा बोले डिफरेंस हरिबन के रही हो ना कोन कहबार अर्थ कहले आजिकल जो हमें यूज करू जे कम्युनिकेशन स्किल रे सेते बेले तो हमें देखु जे आउ टेंस अनुदे हमर एक्सप्रेशन नाही सेंस अनुदे एक्सप्रेशन सेंस को बेस करी हमें कोन करूचे कोडिफाई करूचे एक्सप्रेशन करूचे आजिकल हम टेंस रो अनुदे हमें देखु ना टेंस अनुदे कोडा कोन आबो हमें कहबा मो नाकरू पानी गडुची मो नाकरू पानी गडुची जेतेबेले पानीटा गडुची एटा कोन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से सेंस रे मॉडर्न इंग्लिश कहूची माय नोज इज रनिंग ता माने वो बॉडी रो नाकटा भर जे जोडुची ना 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 ऑलरेडी कोन करची ना हमर ठंडा ही जेची नाकरू पानी गडुची एटा होची सेंस ऑफ द केंतो बहुत गुडा क्लास चलिए सेटल अब तापर देखा बिले
To describe a past action, fourth rule, third rule, third rule, rule number 3, to indicate that the action began at some time in the past. The action began at some time in the past. But is continuing. Up to the present time. Continuing up to the present time of speaking. Present time of speaking. Example. He has lived here. He has lived here for 10 years. He has lived here for 10 years. Next, I would example letter. We have known each other. We have known each other. We have known each other for 10 years. We have known each other for 10 years. Yeah. देखो, to indicate that an action began at some time in the past, but it is continuing up to the present time of speaking. ମୁଁ ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି. I have lived here for 10 years. ମୁଁ ଯଦି କହିବି I have been living here since 2014. एटी कोन हबो since जेतेबेले हमर कोन से गोटे वर्क का स्टार्ट हैला एबे भी सुधा कंटिन्यू करूची आगु को भी कंटिन्यू करिवो से जगह रे आमी since यूज करिवो आ सब बेले देखिवो सेंटेंस रे हमर परफेक्ट टेंस रो वर्तमान को यूज करा जाउथि किंतु जेतेबेले गोटे पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड करिवो सेटा हला फॉर जोटा कोन करथिबो स्टार्टिंग हे जाइथिबो ता एंडिंग पे कोनसी प्रिजम्पशन आसेनी कोनसी प्रकार वातावरण सृष्टि हेनी से जगह में सेंस यूज करिवो मु कहबी अंशुमान आज भी रीडिंग सेंस मॉर्निंग सकाळो पढुची वर्तमान पढुची आउरी आगु भी पढिबी से जगह रे हाज भी आ सेंस भी यूज करो फॉर एग्जांपल कहबी मु कहबी काना at the rate yes hours today आज केते समय बढ़ी से 10 hours बढ़ी तमे पर्टिकुलर गोटे डेफिनेट सेंस को रिफ्लेक्ट करो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेखो रूल नंबर 4 to describe I am loving place तमे को फ्रेंच पढ़िबा शेष ही नहीं कौन तमे वर्तमान कौन कहि जे तुम पचारिबो आई एम परसुइंग प्लस वर्ड्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंटिन्यू करिबो ना नहीं तुमरो नेक्स्ट देखो for to describe a past action the time of which to describe a past action the time of which is neither indicated nor definite. Neither indicated nor definite. Example.
Have you seen a ghost? Have you seen a ghost? Have you seen a ghost? Try to understand so far as the rule is concerned. To describe a past action, the time of which is neither indicated, neither indicated nor definite. Have you seen a ghost? यदि पचरा गया कि तुमने कितने कौन देखी जब बड़ी ghost माने भूत केतरी केतरा विदल देखी से कतो पचरा गया कि किसी पचरा जाएंगे एटा कौन से प्रकार पर्टिकुलर इंडिकेशन में कि डेफिनेट सेंस को नेक्स्ट रूल फिफ्थ रूल टू डिस्क्राइब an action which has not been completed. To describe an action which has not been completed. Not incompleted. Been completed. To describe an action which has not been completed. Example, he has not met me so far. He has not met me so far. Met me so far. He has not met me so far. हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना नेक्स्ट क्लास he has not met me so far. The first quantity of action is satisfaction initiative present perfect. Perfect. Very completed. नहीं ये तो गोटे रूल अनुଯାयी आसीबो ना से एगो एटा को जेते प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज करी हम कांसेप्ट सेते क्लियर हो हम बना के खाली रूल को पढ़ दिना बाबने ये सब इंटरसेप्टिंग हे जीवो प्रेजेंट प्रैक्टिकल जीवो पांच प्रैक्टिकल जीवो फ्यूचर रे तो सब गुडा हमको बात से बोका बने जेति की पढ़िबो सेते के घर एक्सरसाइज करिवो आ लुसेंट्रल ग्रामर गुटा प्रैक्टिस करो हल्ला हो नले जोसेफ माय विश्वास मको पढ़ हे जीवो ना इंटरेस्ट अछि पिला माने अच्छा भलो भलो अछि कॉम्पिटिटिव ग्रामर को ए ग्रामर को ऊपर पढ़े तो से और कैसे भूल रही छी देखिए मैडम क्लास हो